So this is the question number 4 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question, four options have been given to you, and it has been asked out of these given four options, which option complete this particular sentence. So basically this question is based on the errors in Python. So in order to answer this one, first of all, we need to be aware what are errors in Python and what are the different type of errors we have in Python. So first thing first, what is an error in Python? Whenever we write a program in Python IDE, तो होता क्या है बेसिकली जब भी आप आईडी के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हो एंड व्हेन यू ट्राई टू रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम तो उस सिचुएशन में क्या होता है आपका अगर इंटरप्रेटर उस प्रोग्राम की पर्टिकुलर सेंटेंस या पर्टिकुलर ब्लॉक को समझ नहीं पा रहा होता तो इन दैट केस इट थ्रोस अस एन एरर। तो एरर क्या हो गया बेसिकली आपका एक बग हो गया इन द प्रोग्राम विच मीन्स कि हमने जो प्रोग्राम के रूल्स थे उस रूल्स को फॉलो ना करके या जो हम डिराइव करना चाह रहे थे वो काम डिराइव ना करके हम कुछ डेविएट हो गए अपने काम से। तो इन दैट केस जो पाइथन का इंटरप्रेटर है इट विल थ्रो अस एन एरर। ओके, तो अगर मैं बात करूं एरर्स की तो पाइथन के अंदर हमारे पास तीन टाइप के एरर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स एरर, देन वी हैव रन टाइम एरर एंड देन वी हैव लॉजिकल एरर। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है चाहे वो पाइथन हो, सी हो या जावा हो, ऑल दोस लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन द रूल्स। तो रूल्स क्या होगा बेसिकली, जैसे अगर मैं आपकी बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या होता है आपकी जो सेंटेंस फॉर्मिंग है इट फॉलोज पर्टिकुलर रूल। रूल क्या है आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। Similarly, when we write a program in a particular language, be it a Python, be it a C, so we need to follow certain rules. Those rules are known as syntax. अगर हम उन सिंटेक्स या उस रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है इट विल थ्रो अस अ सिंटेक्स एरर। जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से दिस इज एन स्टेटमेंट। अगर मैं बात करता हूँ ये स्टेटमेंट की हम बात करते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू सी, दिस विल लीड्स टू सिंटेक्स एरर। व्हाई सिंटेक्स एरर? बिकॉज पाइथन के अंदर अगर मैं बात करूं तो on the left hand side we cannot have an expression। तो left hand side of an python statement we cannot have expression। तो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ ए पाइथन लैंग्वेज। That's why it will throw us an syntax error. Now let me rewrite this statement in the correct format. This will be the correct statement. Why? Because c equals to a plus b. That means on the left hand side what we have is only one variable. On the other hand, on the right hand side of an assignment operator, we can have an correct expression. Okay. Now moving on to the next one. Let's say if we try to run this one, तो दिस वन विल नॉट गिव अस सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर तो हमारा नहीं आएगा इस केस में क्योंकि ये सिंटैक्टिकली क्या है हमारी कंडीशन करेक्ट है। बट दिस विल गिव अस रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या आएगा बेसिकली आपका, रन टाइम एरर क्यों आएगा, क्योंकि जो वेरिएबल्स आप यूज करना चाह रहे हो ए और बी उनको आपने क्या करा, डिफाइन नहीं किया। तो लेट्स से आपको क्या करना पड़ेगा, उनको रन करने से पहले उनकी वैल्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा। नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ए की वैल्यू विल बी 5, बी की वैल्यू विल बी 5। जब आप इसको रन करोगे नाउ दिस प्रोग्राम विल रन फाइन। इट विल नॉट गिव यू एनी नाइदर सिंटैक्स एरर और नॉट रन टाइम एरर। नाउ व्हाट इज अ लॉजिकल एरर देन? फॉर एन एग्जांपल मुझे दो नंबर को ऐड करना था, जैसे एग्जांपल के लिए लिया a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 7, बट अननोइंगली मैंने क्या कर दिया a माइनस b। दैट मीन्स what I have done, in place of addition I have used subtraction। so in that case it will give us logical error। I hope you got the idea about the errors in Python। now let's see the question there। now question is using a wrong formula for calculation generates a, it will answer would be logical error। why? because let's say for example we need to add two number and क्या करा मैंने, फॉर्मूला गलत यूज कर लिया, तो ये क्या है आपका आंसर तो आएगा, क्यों? क्योंकि सिंटैक्टिकली भी करेक्ट है और आपका रन टाइम भी एरर नहीं देगा आपको। फॉर एग्जांपल क्या करा, ए की वैल्यू ले ली मैंने 5 और सिमिलरली बी की वैल्यू क्या ले ली 7, तो आपका ये आउटपुट तो देगा बट आउटपुट क्या है आपका लॉजिकली करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉजिकली आउटपुट शुड बी 12 बट इट विल गिव यू -2। Hence, for this case, option number C is the correct one। Now, based on the errors in Python, we have a practice question for you। You need to tell in the comment box what will be the right answer for this one। Okay, guys, then that's it for the day। If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box। Okay, then, thanks for your time।